Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express Bulletin. A 19-member delegation representing 3 major Manipur-based civil society organizations, AMUCO, COCOMI and FOCS, will hold talks with the Ministry of Home Affairs in New Delhi on June 30. This marks the 3rd round of dialogue on the ongoing Manipur crisis, but the first time these groups will jointly meet the MHA with a unified agenda. COCOMI convener Kuraijam Atoba said the delegation will voice the public's concerns and frustrations, stressing the need for concrete actions instead of repeated assurances. He expressed disappointment over the government's failure to fully contain violence, particularly in the hill regions, and urged the centre to prioritize restoring peace across the entire state. Atoba warned that this could be the final round of talks unless tangible progress is made. He criticized the inefficacy of President's rule in addressing the crisis, stating that people in peripheral areas still feel unsafe and are unable to return to their farmlands. Despite the presence of 3 security layers, recent violence like the fighting incident at Pubala has deepened public distrust. He urged the government to act decisively to restore security and build public confidence, calling for visible solutions and stronger efforts from authorities. This time it will be more concise and more appropriate in our demands, because after almost several rounds of talks with all our groups, including AMUCO, COCOMI and FOCS, we have been pursuing with the ministry officials on several common agendas, our priorities. However, till date, despite verbal assurances, nothing has been converted into action on ground. So we are hopeful that this time they must be, able to convert some of our demands into action, so that it will help building confidence among the civilian population, which will also help significantly in restoring normalcy in the state. So we will be pursuing with the ministry officials in all the agreed points that we have agreed in our last meeting, even though the meetings were held separately by the 3 groups. However, this time we are going to appeal and pursue it together along with the all other groups. So I think Government of India will also needs to be little pragmatic in this approach, and that will be the only, this will be our last meeting until and unless some deliverable actions being shown on ground. I think it will be difficult for us to follow up in another round of meeting with the ministry official if this time they are not being able to convert it into action. Taming, when you work in the ground, COCOMI has several million people work in the ground. So what is the mood of the people? Are they satisfied with this PR government? No. President rule, people already are fed up of this president rule administration, because they are not being able to deliver any visible solutions which the people can feel. Till then, I think the general public, particularly those in the peripheral areas, haven't felt that sense of security, and their farmlands are still being not able to reach and do their farming. So this kind of violation of their rights to farm in their own farmland for over 2 years, completely more than 2 years, despite deployment of 3 layers of securities, and the recent injuries met by bullets from the other side of the hills, has also again created a very serious distrust towards the kind of security deployment. Therefore, we want the government to be a little more sincere and a little more aggressive in performing their duties. As part of its mission to promote cricket within the district, especially in rural areas, the Repo District Cricket Association visited Bathargma to formally constitute the Western Repo Cricket Development Unit. This initiative aims to further enhance the growth and development of cricket in the region. The official appointment of WRBC DU office bearers was carried out by Rayonald Karakarmi, President of the RBDCA. The day also marked the conclusion of the second
Western Repo cricket tournament, which was held at the Western Repo playground. In his brief address, Karmani expressed happiness at being part of the event, stating that it was a great source of encouragement for the organizers. He emphasized the importance of such initiatives in strengthening cricket at the grassroots levels. Addressing the newly appointed WRB CDU leaders, Karmani urged them to work closely with RBDCA to uplift cricket in the area. He stressed the need to focus particularly on nurturing young talent, as developing any sport requires attention from a very early age. As for the tournament results, Rani Police Outpost emerged as the champions after defeating Batharkma Cricket Club by 2 wickets in a tightly contested match. In the game, Rani PO won the toss and chose to field first, allowing Batharkma Cricket Club to bat. Batharkma scored 82 runs in 15 overs. In response, Rani Police Outpost successfully chased down the target, scoring 83 runs in just 14.4 overs, thereby sealing their victory and lifting the tournament trophy. Goes to Satama, he is there. Target saya langsung berpilihan sungi iwe macam musim no kila yale hi berpilihan target dari pemilihan no mesti dalam handle sampai keterangan gila kai champion kan suri will bounce back mo The Taming Long Running Club, a transformative fitness initiative launched by the Assam Rifles, was officially inaugurated today with an enthusiastic turnout of participants and dignitaries. The club aims to promote fitness, unity and a drug-free lifestyle among the youth of Tamenglong. Open to all regardless of tribe, age or background, the initiative seeks to encourage healthy habits, instill discipline and foster social harmony through regular community runs. Over 50 keen and potential marathoners, along with numerous enthusiastic fun runners, joined the event, signaling a strong community response. The flag-off ceremony was graced by various civil society organizations, the Superintendent of Police and other dignitaries, underscoring the collaborative spirit behind this movement. Top performers were felicitated with sports shoes, fitness watches, t-shirts and other fitness-related gifts. The event concluded with a light breakfast and refreshments, reflecting the spirit of camaraderie and shared wellness. More than just a running group, the Tamenglong Running Club represents a movement, one that seeks to steer youth away from negative influences and towards a future of strength, positivity and collective pride. On June 28, Power and Agriculture Minister Ratanlal Nath addressed the program under the Jan Jadiya Gaurav Varsh Dhatiapa Jan Bhagidari Abhiyan at Rangachara Gram Panchayat in Tripura's Mohanpur RD block. He highlighted the government's commitment to inclusive governance and the welfare of tribal communities. Nath praised the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Professor Dr. Manik Saha, stating that a wide range of government services, including Aadhaar, PAN
ration cards, medicines and social pensions were being delivered through outreach camps. He also noted the distribution of essential documents, fruit saplings and agricultural machinery to tribal beneficiaries. Emphasizing last-mile service delivery and rural empowerment, Nat called the initiative a testament to the double-engine government's efforts to ensure development, dignity and self-reliance for tribal communities. মেয়ের অফিসে জমা দেয় তো এতদিন অফিসে আমাদের ইমার্জেন্সি না ঠিক আছে এখানে ইনকাম সার্টিফিকেট পেয়ে গেল মনে হচ্ছে তাহলে কোথাও উঠবে এখানে আমি ইচ্ছা করলো ওই আজকে সমেত দেববর্মা এবং নমিতা দেববর্মা ওরা দুজনে ন্যাশনাল কার্ডে নাম আছে ওনার একটা বাচ্চা সন্তান আছে 8 মাস 8 মাস 8 বছর 8 বছর তাহলে 8 বছর ধরে তুলনা কেন তুলনা 8 বছর ধরে তুলনা কেন কোন অসুখ শরীর খারাপ হচ্ছে ইচ্ছা করে ডাক্তার আছে এখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার জন্য ওষুধও আছে আবার ডাক্তারবাবু বসে আছে সেখানে ডাক্তারবাবুরা দেখে দিয়ে বলবে আপনার যদি কোনো অসুখ In a major anti-narcotics operation on Saturday morning, a joint team of the Border Security Force and Tripura Police seized a significant quantity of illegal drugs from Srinagar under Sabroom subdivision in the state's South District. The raid was conducted around 8 a.m. at Durgabari area of Ward number 2 in Krishnanagar village. The joint forces recovered 231 bottles of fentanyl and approximately 16 kilograms of cannabis with an estimated market value of Rs 1.5 lakh. Well, according to local sources, the accused has been identified as Nitin Debnat, son of Chitara Ranjan Debnat. He had allegedly stored seized drugs in his house with the intent of smuggling them across the Bangladesh border. However, sensing the presence of the security forces, the accused managed to flee the scene. A search operation is currently underway to trace him. At a time when the government is pushing for a drug-free India through widespread campaigns, the existence of such active smuggling networks in border areas remains a matter of serious concern for the administration. Citizens have urged the authorities to strengthen surveillance along the international border. আমাদের কাছে একটা খবর আছে যে কৃষ্ণনগর দুর্গাবাড়ি এরিয়ার নিদান দেবনাথের বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস আছে তো সেই মোতাবেক আমরা প্ল্যান করে এফএসএল টিম এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তারপরে বিএসএফ আমাদের পুলিশ তারপরে মনোবাজার থানার ওসি আমি নিজে আমরা এখানে ঘটনাস্থলে আসি তারপরে এনডিপিএসের যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর মোতাবেক আমরা ঘরের চাবি ছিল না তালার তো বাড়িতে একজন মহিলা আছে বাড়ির মালিক তো ওনার কাছে চাবি নাই তারপরে আমরা ঘরের তালা খুলে আমরা ঘরে সার্চ করি প্রসিডিউর অনুযায়ী সার্চ করার পরে আমরা ঘর থেকে 15 কেজি 180 গ্রাম গাঞ্জা এবং 231 বোতল ফেন্সিডিল আমরা উদ্ধার করি সেগুলি আমাদের যে নিয়ম অনুযায়ী এনডিপিএসের সেগুলিকে আমরা সিজার করি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আমরা এটা নিয়ে এসে একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করব এবং তদন্ত আমরা শুরু করেছি এই ব্যাপারে Security forces arrested 2 militants on Saturday belonging to different proscribed outfits from Bishnupur and Tengnobal districts of Manipur. Security forces arrested one active cadre of the banned Kanglepa Communist Party, Taipang Amba, from his residence at Oinam Ushakang Dabi in Bishnupur district. He has been identified as L. Sanamcha Singh, 20. Another active cadre of the proscribed People's Liberation Army was arrested from the vicinity of border pillar number 87 in Tengnobal district along the Indo-Myanmar border. He has been identified as Moirangtem Sanatoy Singh, 23, 1.303 rifle with magazine, 3 12-bore double-barrel gun, 73 numbers of 12-bore live cartridges, 2 Latod shell, 1 number .36 hand grenade with arming ring, 1 helmet and 1 BP jacket were recovered during an operation at the foothills of Ngarian Hill in Imphal East District on Friday.
Over the issue of Kolkata alleged gang rape, AIUDF MLA and Party General Secretary Rafiqul Islam said that such incidents are happening in India everywhere. No state is free of such cases. This case came to light as the media highlighted it. So he requested all to obtain the data from the crime branch and determine how many such cases there are. Every government has failed in women's security. TMC and West Bengal government are not special. Such incidents are happening in Assam and UP too. तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे इंडिया में, भारत में देखिए, रोजाना हमारे बेटियों के साथ ये दरिंदगी हो रही है। हर स्टेट में, कोई स्टेट इससे खाली नहीं है। मैं सिर्फ कलकत्ता नहीं बोलूंगा, ये तो एक घटना घट गई और मीडिया वालों ने हाईलाइट किया, ठीक है, लेकिन रोजाना आप हिसाब निकाल के देखिए, क्राइम ब्रांच से आप रिपोर्ट ले लीजिए, हर स्टेट में रोजाना हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह दरिंदगी हो रही है। तो सरकारें फेल है, बेटियों को और बहनों को जो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना चाहिए, सब सरकार फेल है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस या वेस्ट बंगाल नाकाम ऐसा नहीं, आसाम में भी रोजाना हो रहा है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। इस तरह घटना हर दिन हर स्टेट में इस तरह की घटना घट रही है। तो इसमें बंदिश लगनी चाहिए। बहू बेटी हमारे बहनों को सेफ्टी सिक्योरिटी उनके का बंदोबस्त जबरदस्त अंदाज में होना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी सरकार या कोई भी स्टेट सरकार है, सब फेल है। अब वेस्ट बंगाल में चूंकि इलेक्शन है, अब इस इशू को बीजेपी वालों ने कैच किया है। अब दरिंदगी करने वाले तो जो लड़के हैं वो तो स्टूडेंट है उसी कॉलेज का, किसी का बीजेपी के साथ ताल्लुक होगा, किसी का टीएमसी के साथ होगा, किसी का कांग्रेस का साथ होगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन किस पार्टी से किसका ताल्लुक है इससे मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि जो बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल से लेकर भारत के सब स्टेट में रोजाना इस तरह की घटना घट रही है। मैं जो मीडिया है, नेशनल मीडिया से मैं आग्रह करूंगा, सिर्फ बंगाल की इस घटना को उजागर करके आप मत छोड़िए। रोजाना आप क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट लीजिए, लेके जहां जहां इस तरह की घटना घट रही है उसको आप जोर शोर से मीडिया लोग उठाइए और फिर सरकार को आप लोग मजबूर कीजिए कि सरकार इस तरह की घटना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फर्स्ट ट्रैक में इन लोगों का उसका हो केस चले और जो दरिंदगी किया है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उसका सख्त से सख्त सजा हो जाए। From space, one cannot see borders. There are no visible boundaries between nations. What stood out most was the sheer unity of the planet, Group Captain Subhanshu Shukla told Prime Minister Narendra Modi during a video interaction from the International Space Station on Saturday. Underquote, when we look at maps, we compare the sizes of countries, including India, and often see a distorted picture because we're flattening a three-dimensional world onto paper, unquote, he said. But from space, India appears truly grand, majestic in scale and spirit. Shukla, the first Indian to reach the ISS, said his overwhelming sense of oneness aligns perfectly with India's civilizational motto of unity in diversity. From above, Earth looks like a single home shared by all, reminding humanity of the harmony and connection we inherently share. PM Modi congratulated him for hoisting the flag of India in space and said, although that he is the farthest from the Indian motherland, he is the closest to the hearts of all Indians. Calling science and spirituality the twin strengths of India, the PM said that with the success of the Chandrayaan mission, there is renewed interest in science among children and youth. आप आज मातृभूमि से, नमस्कार, भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है।
अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभ। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ। परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से। और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त। और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं। और That's all for now. Keep watching Hornbill TV. পোহৰ আৰু শব্দ এই পৃথিৱীখনক জনাৰ আৰু বুজি পোৱাৰ দুটা প্ৰধান উপাদান। পোহৰ আৰু শব্দৰে আমি আমাৰ পৃথিৱীখনক জানো, বুজো, আমাৰ পৰিচয় গঢ়ো। যদি পোহৰ আৰু শব্দবোৰ নোহোৱা হৈ যায়, তেওঁলোকৰে জীৱন অৰ্থবহ কৰি তুলিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। বৰ্তমান তেখেতৰ প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাৱধানত অসম চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় সাহায্যৰে চলি থকা মুকবধিৰ শিশুৰ বাবে গুৱাহাটীস্থিত BDS চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যোৰহাট অন্ধ বিদ্যালয়, গুৱাহাটী অন্ধ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ধৰি চৰকাৰী সাহায্যত চলি থকা আৰু বহুতো প্ৰতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়খন 1949 চনতে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, আৰু সমগ্ৰ আমাৰ যি ফাণ্ড আহে বা আমাৰ যিখিনি সহায় সহযোগ লাগে, এইটো আমি সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ পৰাই, অসমৰ পৰাই আমি পাওঁ। আমাৰ যোৱাবাৰ SSLC এক্সামত প্ৰায় 100% বুলি ক'ব পাৰি উত্তীৰ্ণৰ হাৰ, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলতো 100% বুলি ক'ব পাৰি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মানৱীয় দায়িত্ববোধৰ বাবে শব্দ আৰু পোহৰৰ চাক চমকতাত দিশহাৰা হ'ব খোজা এই পোহৰহীন বাকহীন শিশুবোৰৰ জীৱনলৈ আহিছে জীৱন জোখাৰ উৎসাহ,
আস্থা আৰু এয়াই হৈছে ভৱিষ্যত অসমৰ সবল ভেটি